Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship, and we kept the relationship during the 4-year period. The period that was a very interesting period indeed. I got to see how not to do things, and we've just started up again, and we have, I think, some very big things to talk about. Number one is they're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have more oil and gas than any other country in the world by far, and they need it, and we have it. And we're going to talk about trade. We're going to talk about many things, but it's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. प्रधानमंत्री जी, आपको मिलकर बहुत समान महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि आज फिर आप यहाँ पर आए हैं, और हम पिछले 4 साल आपसे हमारी बात हुई है, और हम उस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं जो 4 साल में हमने पहले बढ़ाया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर समय आने वाला है हमारे सामने दोनों देशों के लिए। आपने देखा है कि हमारे पास बहुत कुछ करने को है। अभी पहली बात है तेल और गैस की बात है, और हमारे पास काफ़ी तेल और गैस है, और आप इंडिया में उसकी ज़रूरत है जो हम देंगे। बाद में बात आती है ट्रेड की, व्यापार की, और इसके अलावा हमें बहुत खुशी है और बहुत ही हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि मेरे एक मित्र आज वापस यहाँ आए हैं, और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी है। Would you like to say anything more? No, I'm okay. एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। Your Excellency, I'm delighted to see you back in the White House and to meet with you today in this room. On behalf of 1.4 billion people of India, let me convey my heartiest congratulations to you on your grand and historic victory. ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है, और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। Last year, the people of India gave me the opportunity to serve them for the 3rd consecutive time, and it has happened in the history of India in the last 60 years for the first time. And in this term, I will have an opportunity to work with you over the next 4 years, and it's a great pleasure to see the two coincide. And I can say from my past experience of working with you in your first term that we will continue to advance the India-US strategic partnership with the same warmth, with the same trust, and with the same excitement. और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। I'm happy that as soon as I entered this room, my friend reminded me of Ahmedabad and the cricket stadium where we held the big rally, and the events that we did, the mega events that we did in Ahmedabad, Namaste Trump, or the Howdy Modi in Houston. We had conveyed a very strong message of our friendship through those events, and the resounding echo of those events can be heard even today in India and the world. भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी
हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। Excellency, you made immense personal contribution towards strengthening of our relations, towards making them more comprehensive and in attaining unprecedented heights in our relationship. And I firmly believe that in your second term, we will work with even more speed. और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। As I had promised to the people of India that in my third term as the Prime Minister of India, we will work with thrice the speed. I firmly believe that with President Trump, during the next 4 years, during his second term, we will work with twice the speed that we did in the first term. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख कर के काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। One thing that I deeply appreciate and I learned from President Trump is that he keeps the national interest supreme, and like him, I also keep the national interest of India at the top of everything else, and this has been my real fortune. राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। President Donald Trump and Make America Great Again are inseparable. Whenever we talk about President Trump, one has to talk about Make America Great Again. Similarly, that vision inspires everybody. Similarly, in India, we have the resolve of 1.4 billion people of India that by the time India reaches the 100th anniversary of its independence, we will make our country a developed country by 2047. And this is getting new speed and new resolve. अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की तख्ती, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। US is the world's oldest democracy, and India is the world's largest democracy. So when India and the US come together, they make 1+1 11 and not 2. And this is the power of 11 that is going to work for the welfare of the humanity. मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। I once again thank my friend President Trump, and we together resolve that we will together march towards progress and towards prosperity for our nations. Thank you. Thank you. Thank you very much. And he's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत में, और हर कोई इसी की बात कर रहे हैं कि वे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत महान नेता हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके इन शब्दों के लिए, और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक आपकी इस भावना का आदर करता है। I thank you for your warm words, Mr. President, and I firmly believe that every person in India respects your sentiments. Thank you. Thank you very Thank much. you. Thanks a lot. Any questions, please? Yes, President. You are both very popular leaders in your respective countries. You've spoken about a common sense diplomatic doctrine. So what's a Trump-Modi doctrine that we should expect from the meetings आप दोनों ही बहुत popular leaders make हैं। our words जाने better वाले and safer? लीडर हैं आप लोग, तो Well, I think more than anything else will be the unity. We have great unity. We have great friendship, he and I and our countries. And I think it's only going to get closer. But it's very important that we remain united as countries. We're friends, and we're going to stay that way. President, how are you going to fight China if you're going to be tough with India on trade? How are you going to beat China then?
We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. We've done a fantastic job for the American people. We had a great 4 years, and we were interrupted by terrible administration, absolutely terrible. They didn't know what they were doing, and now we're putting it back together, and I think it's going to end up being much stronger than it was before, even much stronger than it was before. प्रधानमंत्री जी आप हमेशा से May I? Yeah. President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. I'm particularly impressed by the expose on USAID. And I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. So it could have had a role. There were a lot of bad things that happened in 2020. I think bad things happened in 2024, but it was too big to rig. We won by a tremendous margin. We won every swing state. We won the popular vote by millions of votes. So it was too big to rig. But yeah, I think they probably tried. We're looking to go to a system now much different, where one-day voting, voter ID, and we have to do that. And paper ballots. We want paper ballots. And when they do that, we're going to clean it up very, very well. But we had a great 2016. We had a much better 2020 election, but bad things happened. And we had the best of all. We had, they say, the most consequential in history, 129 years. Most consequential. So it was a great election, and it gives me a chance to work again with the Prime Minister and India. And we're going to have a great relationship together. Mr. President, do you see प्रधानमंत्री जी कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है और युद्ध को रोकने की बात कही है. आप हमेशा से सर. Do you see India playing a role in your plan to broker a peace in Ukraine? And if I could ask you about a development in your hometown today, the U.S. attorney has resigned over the DOJ's request to drop the case into Eric Adams. Did you personally request the Justice Department to drop that case? No, I didn't. I know nothing about it. I did not. I think that, just to answer your other question, we're just going to get along well. We're going to get along with all countries. We're going to do very well. We're going to be doing, I think, record business, record numbers. And we're going to work with India also. We have some very big trade deals to announce in the very near future. प्रधानमंत्री जी कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है. आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले. आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है. दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है. भारत न्यूट्रल नहीं है. भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति. हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में
मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। As far as the Russia-Ukraine conflict is concerned, I'm very happy that President Trump has taken initiatives to restore peace and had telephone calls with President Putin and President Zelensky. The world had this thinking that India somehow is a neutral country in this whole process, but this is not true. India has a side, and that side is of peace. From the very first day, I have been talking about the importance of dialogue and diplomacy and a peaceful solution. And when I met President Putin in the presence of media, I had told him that this is not the era of war, and I have firm conviction that problems cannot be resolved on the battlefield. The two sides will have to come to the negotiating table. शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं।